सलाम एंड वेलकम टू नाजुक मोड। मेरा नाम है अंबर रहीम शम्सी और मेरे को होस्ट उजैर आपके साथ हैं। और प्रोग्राम का तारुफ और अपना तारुफ शायद अपना हमें करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज पर हम आज डिस्कशन करें, काफी ज्यादा एज यूजुअल इट्स बीन अ वेरी हैवी न्यूज वीक। हम फोकस जो हमने वादा किया था पिछले हफ्ते कि हम जो पीडीएम हुकूमत ने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, क्या गलत किया और क्या शायद सही किया, उस पर बात करेंगे। एसेंशियली वी आर गोइंग टू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। इसके अलावा जाहिर है उसी से मुंसलिक है इस वक्त जो इंतखाबात की बात है, चाहे कराची की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो या पंजाब की बात है, उस पर हम बात करेंगे। एक इंटरव्यू भी उजैर ने लाइन अप किया, आई लेट हिम इंट्रोड्यूस दैट, शुड बी वेरी फैसिनेटिंग इंडिया और चाइना के हवाले से। और आखिर में हस्बे मामूल विनर्स एंड लूजर्स। और मैं ये अभी से बता दूं, थोड़ा सा लेट मी दाना डाल दूं कि इस हफ्ते मेरे लूजर्स में इलीट बहुत ज्यादा है तो और अंबर जो लोग एलीट्स इलीट को कॉल आउट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा अंबर एलीट्स को टारगेट कर रही है और मुझे लग रहा है एलीट्स को टारगेट करने वालों में मेरा भी नाम शामिल है। तो लगता है कोई फायरिंग आने वाली है आज अंबर की तरफ से। अंबर, पहले तो वेलकम टू द पॉडकास्ट फ्रॉम कराची। मेयर बना नहीं बना आपके शहर में, इधर से पहले स्टार्ट करें, क्या अपडेट है? ये शहर जो है ना उज़ैर, यतीम है शहर, और ये एलीट की वजह से है ना। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो बातचीत है वो चल रही है। और एक दिन उससे इसी हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात हुई थी जमाते इस्लामी की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यही मौकफ है कि ये इंतखाबात दोबारा से होने चाहिए, धांधली हुई है। जो 2023 कह सकते हैं, होपफुली इलेक्शंस इसी साल होंगे। लेकिन इलेक्शंस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी, उनकी उम्मीदें और फिर उनका जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन है, आई थिंक इट्स अ गुड इंडिकेशन। सो जी, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से। वी डोंट हैव अ मेयर येट। हाफिज नईम जो है ना, बहुत ज्यादा लोग हक में कि वही बन जाए। लेकिन सच बात यह है कि इस वक्त सीटें जो हैं ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हैं, लेकिन वो खुद भी मेयर का जाहिर है अकेले नहीं कर सकते। और हाफिज साहब ने तो रैप सॉन्ग्स और अपनी मार्केटिंग के थ्रू कराची के वोटर्स को, लो वोटर टर्नआउट के बावजूद, जो है वो आई थिंक ही दिल जीत लिए। दिल और जान से दिल जीत लिए हैं। तो इस पे तो बात करते रहेंगे। एंड अगेन आई थिंक इट्स ominous साइन एज वेल। अंबर, आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट टू द जनरल इलेक्शंस के अगर कराची जैसे शहर में एक बेसिक लोकल बॉडी इलेक्शन जो कि किसी भी मुल्क में आम तरह से हो जाता है, कोई उस पर शोशा नहीं होता, उस पर अगर इतने दिन लग रहे हैं और इतनी कंट्रोवर्सी है, तो जनरल इलेक्शन में तो फिर अल्लाह खैर ही करे। Absolutely, absolutely. Like I said, I think it's a good indication. It's a, on a small scale के आगे क्या होने वाला है। आगे नाजुक मोड़ ही है। तो चलते लेकिन उससे हैं, पहले आगे क्या होने वाला है अभी की बात करते हैं। अब अभी की बात करते हैं और शहबाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं। मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है अंबर, क्योंकि हमने लोगों से वादा किया था कि हम उनसे शेयर करेंगे कि क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं और हुकूमत उनकी है, तो ऑब्वियसली जब तनकीद होती है तो द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे 5 बड़े जो हैं वो क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द मिसस्टेप्स देव मेड। द फर्स्ट वन आई थिंक स्टार्टिंग विथ द इकोनॉमी, के बड़े इनडिसाइसिव थे शुरू में जब आए, और उसका ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप था। ही डिड नॉट नो एंड दे डिड नॉट नो कि खान साहब जो हैं वो कितना डिस्टेबलाइज करेंगे। बट डिस्पाइट दैट, आप जब आते हैं आपको मालूम था कि हालात ख़राब हैं, तो डे ज़ीरो पे जो एक्शन लेने थे, पेट्रोलियम सब्सिडी रिवर्स करनी थी फॉर एग्जांपल, उसमें भी कई हफ्ते उन्होंने लगा दिए एंड द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड। सो दैट्स क्रिटिक नंबर 1। नंबर 2 इज डेफरेंस टू लंदन। उन्होंने जो किया कि हर चीज़ में जो है या तो खुद लंदन चले जाते थे, या लंदन से बातचीत होती थी, या लंदन से अप्रूवल आता था, या टीम लंदन जाती थी। अभी भी राना सनाउल्लाह साहब इस हफ्ते लंदन गए हैं मियाँ साहब से मुलाकात करने। तो ये जो लंदन से सियासत चलाई जा रही थी रिमोट कंट्रोल से, ये आई थिंक इज अ सेकंड क्रिटिक। द थर्ड वन, कि अगर आपने एक शख्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी है क्राइसिस के अंदर, मिफ्ता इस्माइल, और आपकी अपनी पार्टी का ही एक लीडर जो है, सीनियर मेंबर, बार बार उसे अंडरमाइन कर रहा है, मीडिया पे आके खबरें चला के, ट्वीट्स करके, अपने सरोगेट्स के थ्रू, तो आप एज अ पार्टी लीडर, बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एंड द पार्टी लीडर, आप उनको रेन इन नहीं कर सके। तो आपने खुद ही अपनी कैबिनेट के अंदर जो है एक तरह से फूट पड़ने दी, और उसका नतीजा आज तक हमारे सामने है कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्वेटा में सेमिनार्स कर रहे हैं, कभी जियो पे जाके किसी को कह रहे हैं कि गलतियां ये हुई, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी डार साहब के बेटे उनको जोकर बुला रहे हैं।
तो ये एक तीसरी थी। चौथी, आई थिंक दिस वन इज अंडर एक्सप्लोर्ड, अंबर, के फॉर अ मैन हु हैज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर सो लॉन्ग, he outsourced the politics of Punjab to Rana Sanaullah and Ataullah Tarar, which is a bit odd to me कि अगर आप इतना बड़ा सूबा है और आपने उस सूबे को चलाया है, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपने खुद इन्वेस्ट नहीं किया टाइम और एफर्ट उसमें, उसकी पॉलिटिक्स को फिगर आउट करने में। पहले आपका बेटा था, फिर बेटा रूठ के चले गया बाहर, अभी तक बाहर ही बैठा हुआ है ऑपोजिशन लीडर बन के। तो you did not step in, which is weird to me. As a former chief minister, I would have expected more, and I think this is an underexplored part of why Shehbaz sort of ignored Punjab, even though he belongs to the Punjab and has been running Punjab for so long. And then finally, I think ये तो obviously बात है कि हर चीज़ खानदान में रखने की इनकी जो आदत है, कि बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए, समधी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, और बेटी जो है वो ऑर्गेनाइजर बन जाए। आई थिंक दिस अगेन इज अ क्रिटिक कि आप इस तरह पार्टी नहीं चला सकते, स्पेशली एक पार्टी जो इतने टाइम से, इट मेक सेंस, नवाज शरीफ इज द लीडर एंड ऑलवेज हैज बीन द वोट कैचर, लेकिन जब आप एक ट्रांजिशन में जा रहे होते हैं तो हर चीज़ खानदान के अंदर रखना, बिलखुसूस खानदान में आपस की लड़ाई भी है, तो इट डजंट सूट वेल। तो ये मेरे 5 जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं अंबर के, यहाँ इन्होंने जो है, दीज वर द बिग मिसस्टेप्स दे मेड ओवर द लास्ट ईयर और सो। I think it actually goes back to the biggest misstep, और बार बार शाहिद खाकान अब्बासी जैसे जो अब वो भी सेमिनार का हिस्सा हैं, हालांकि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिनाई किया कि वो पार्टी से जा रहे हैं, लेकिन बिगेस्ट मिसस्टेप वाज ऑब्वियसली कि आपने फॉरेन इलेक्शंस नहीं करवाए। और मैं कहूंगी कि आपने, क्योंकि जाहिर है क्योंकि वो वजीर आजम है, उनको जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की सियासत और जिस तरीके से वो चला रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे उसका भी जाहिर है, हम इसको जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि 11 तकरीबन जमातें, इसमें बड़ी जो स्टेक होल्डर जमातें हैं, इसको पीडीएम की हुकूमत एक वजह से कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत एक वजह से कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, डिस्पाइट द फैक्ट उनके सीटें नहीं हैं कौमी असम्बली में उतनी ज्यादा, लेकिन उनका भी बहुत ज्यादा किरदार है इस तमाम मामले को चलाने में। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला लिया था कि इंतखाबात नहीं करवाने, वो उनको अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक आपको क्राइसिस फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त आपने अपॉइंट किया था, मिफ्ता इस्माइल साहब, और उस वक्त भी उसी उनको प्लेस होल्डर के तौर पे भी देखा जा रहा था उस वक्त भी, जस्ट इंफॉर्मेशन कि इसाक डार विल फ्लाई इन फ्रॉम लंदन एंड सेव द डे। और मिफ्ता इस्माइल जो है वो जहां थे भी प्लेस होल्डर, लीगली भी थे, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, तो एक टर्म लिमिट ऑटोमेटिकली उनके ऊपर लगती है, बिकॉज ही इज नॉट अ सेनेटर एंड डार इज अ सेनेटर। सो जो शहबाज शरीफ की जो मफाहमत की सियासत में वो यकीन भी रखते हैं, एंड टू बी फेयर, व्हेन यू हैव अ कोalition गवर्नमेंट, आपको कंसल्टेशन तो करनी पड़ती है। उसमें कंसल्टेशन 2 बड़ी जमातों का मैंने नाम लिया, लेकिन और भी स्टेक होल्डर्स मजीद हैं इसमें। MQM इज वन ऑफ दम, फॉर इंस्टेंस। और काफली के जो कुछ टूटे फूटे लोग हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और अब हम ये हाल देख रहे हैं कि एक मैसिव ओवर ब्लोटेड कैबिनेट है, जस्ट टू अकोमोडेट एवरीबडी। सो ये हर किसी के साथ, सिर्फ लंदन के साथ नहीं, हर किसी के साथ मुशावरत करना कुछ मजबूरी भी है और कमजोरी भी है, जिसकी वजह से आपको विद इन द कोalition बहुत सारे ऐसे लोगों का ख्याल था, पीपल्स पार्टी अमंग दम, के कंटिन्यू करना चाहिए। और जाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, लेकिन उनको मजे तो खूब ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन टूर्स भी कर रहे हैं, ही इज बिल्डिंग हिज प्रोफाइल। सिंध में उनकी इनकी पोजीशन मजीद मुस्तहकम नजर आ रही है पोस्ट लोकल बॉडीज इलेक्शंस। इन सब ने अपनी सियासत मेरे ख्याल में खूब बचाई है, चमकाई है, उहदों के हवाले से या अपने सूबे के हवाले से। तो ये एक कमजोरी, मैं कहूँगी एक और कमजोरी भी है। और शायद आई मीन इन दैट पोजीशन वुड आई हैव डन differently, I don't know. I mean, I just want to say कि I want to be fair कि coalition को चलाना बहुत आसान नहीं होता. You have to accommodate a lot of different voices. But I think that is actually the original sin, जहां उन्होंने elections foreign नहीं करवाए, जो भी उन्होंने कानून साजी करवानी थी उसके बाद करके। फिर obviously I think ये जो IMF वाला फैसला है, I think it's also very interesting, जहां जो फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट जो हैं डॉक्टर आयशा, उन्होंने भी एडमिट किया था कि हम चाह रहे थे कि कुछ शराइत हैं जो बहुत ज्यादा सख्त हैं, मगर क्या करें, करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने वही
जो गलती जो इमरान खान की हुकूमत जो असद उमर के दौर में उन्होंने वही गलती की जो उस वक्त उस पर तनकीद भी करते थे और खुद भी उन्होंने बिल आखिर यही किया कि बहुत मुश्किल शराइत है, बहुत कंडीशंस हैं, और कोई नजर आ रहा था कि क्योंकि आर्मी चीफ ने भी टूर्स किए, शहबाज शरीफ ने भी टूर्स किए, बिलावल भुट्टो ने भी टूर्स किए, nobody was biting, nobody was willing to help Pakistan unconditionally given our history. तो जब वो नाकाम हुए तो फिर बिल आखिर आईएमएफ की शराइत पर अब उनको पूरा उतरना पड़ ही रहा है, जो यही इशारा मिल रहा है कि देयर इज रियली रियली एब्सोल्युटली नो चॉइस एनी मोर। तो ये जो चॉइस थी ये इस वक्त अगर और भी ज्यादा लिमिटेड थी, उस वक्त भी इतनी लिमिटेड थी। सो आई थिंक इट्स दैट इनडिसीजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज, goes back to the fact, and I'm going to now go back to the other part of politics, which is आपको नहीं पता कि आपकी हुकूमत कितनी देर तक है, क्योंकि आप एक opposition leader हैं who is angry, is wronged। अब उनकी जो नेक्स्ट स्टेप थी कि गलती जो मैं समझती हूँ कि जब एक दफा फैसला कर लिया था कि आपने हुकूमत में रहना है, और इसके बावजूद आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपने मईशत का क्या करना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि आपने कब तक हुकूमत में रहना है। एंड दिस इज वेरी की, क्योंकि एक तरफ आपके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी ड्यू थी। अब बाजवा साहब बाय ऑल अकाउंट्स एक्सटेंशन चाह रहे थे, इमरान खान के साथ भी वो यही बातचीत कर रहे थे, इमरान खान भी तैयार थे, उनको ऑफर कर रहे थे, यहाँ भी वही वो चाह रहे थे। So that uncertainty, coupled with Imran Khan being an extremely, obviously, a very an aggressive, disruptive opposition leader, ये भी इस हुकूमत को नहीं पता था कि इलेक्शंस कब होंगे, जिसकी वजह से आपको ये नजर आया कि they also did not know how to handle Imran Khan, then the threat that the opposition leader and PTI posed. So that was, I think, mistake number 2. अब यहाँ नजर आ रहा है कि अब इनके पास चॉइसेस क्या है, व्हाट नेक्स्ट, आई थिंक इज अ क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। व्हाट नेक्स्ट में अभी तक अनसर्टेनिटी मौजूद है, अभी तक गैर यकीनी है, और वो ये गैर यकीनी क्या है? अक्टूबर में इलेक्शंस बाय ऑल अकाउंट्स शुड बी हेल्ड डिस्पाइट इमरान खान्स posturing and attempts at trying to bring the election date forward. लेकिन दूसरी तरफ इनको भी नहीं पता, बिकॉज अभी भी ये चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो इन्होंने अपनी वोट बैंक लूज किया है, जो मकबूलियत उन्होंने गंवाई है इस पूरे चक्कर में, वो किस तरह से वापस ला सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं 2 तरीकों से। इलेक्शंस की तारीख आगे करें, अभी भी ये बातचीत चल रही है कि इमरजेंसी नाफिज कर दें और इलेक्शंस की तारीख और मजीद आगे कर दें, और नवाज शरीफ की वापसी से। सो अगेन आई थिंक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज had held itself together under very difficult circumstances post 2018 is really floundering at the moment, just because of not being able to figure out what the next plan or what the next step should be. And इस पूरे चक्कर में Pakistan People's Party is coming out smelling like roses, have strengthened themselves politically, got positions जहां उनको एक easy wins भी मिल जाती हैं, एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन उनकी हो गई है as leaders from Pakistan, and I think so I think in all of this mess, the PMLN has really lost and the PPP has won, and the PTI is, well, the PTI, which is the bad boy of Pakistani politics that you don't know what to do with, really. I agree with you that People's Party is come out smelling like roses. I think that's well put. 2 चीजें अंबर इसके अंदर तो जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो अगर लोगों ने नहीं पढ़ी है किताब तो ज़रूर पढ़ें, नसीम ज़हरा की कारगिल टू द कू। और उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रिसर्च में लिखा है, बड़े एक ही पैराग्राफ के अंदर जो है ना, बड़े प्यार और मोहब्बत से मासूमाना फैक्ट रख के फिर वो आगे चल जाती हैं किताब में, कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का ख्वाब इस्टेब्लिशमेंट का 1998 में भी था कि 1998-99 के आसपास भी वो कह रहे थे कि आप आ जाएं लाहौर से इस्लामाबाद, आपको हम डेप्यूटी पीएम या पीएम बनवाते हैं, क्योंकि मियाँ साहब से तो हमारी बनती नहीं है, तो और आपका गवर्नेंस का जो है ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपको यहाँ लगाते हैं। तो ये एक ख्वाब भी जो है ना वो पूरा हो गया, कि खान साहब को भी लगाने का एक ख्वाब था वो पूरा हो गया, अब शहबाज शरीफ को लगाने का ख्वाब ये भी पूरा हो गया। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि एक प्रेफरेंस हमेशा से रही है शहबाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो वो ज़रूरी है लोगों को याद दिलाना कि ये भी एक जो है हाइब्रिड प्लानर्स जो हैं उनकी प्लान का एक पुराना जुज था
कि ये भी एक्सपेरिमेंट ट्राई कर देते हैं। और दूसरी बात अंबर के अभी भी प्लान, मेरा फियर है कि जब आईएमएफ की शराइत अब मानना शुरू करेंगे, रूमर हैज इट मंडे से, पीर से, कल से शुरू हो जाएगी ये, नज़र आने लग जाएगा, तो उसका जो ब्लोबैक आएगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, महंगाई की सूरत में, उसका फिर ऑब्वियसली पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है। पंजाब इज गोइंग इनटू एन इलेक्शन साइकिल, कि ये आधा जाके फिर वापस ना आ जाए, क्योंकि प्लान तो है नहीं कोई। तो उन्होंने यार डुबकी लगाते हैं, अब डुबकी लगाने के बाद पैनिक करके वापस आ गए तो और बुरा हाल होगा। और दिस इज माई बिगेस्ट फियर, दैट द इंडिकेशंस आई एम गेटिंग इज दे डोंट हैव अ क्लू कि अगले 6 महीने इसको चलाना कैसे है, लेट अलोन के साल की एक्सटेंशन करके चलाएं। एंड दिस इज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर द इकोनॉमी। No, absolutely, Uzair. I agree with you, and that's what worries me. जब मैं what next भी देखती हूँ और जो जब लोगों से बातचीत करती हूँ, तो I don't think anybody in power who has been close to power actually has a sense of what to do next. And I think that big question mark is the real problem. It isn't that there is a crisis. It is that you don't know what to do with the crisis. You don't know how to get out of the crisis. And I think इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के ख्वाब तो पूरे हो गए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है अगला ख्वाब किसका है? And I think that's something that we'll have to keep an eye out on. Obviously, there's many ambitions, and people can see a lot of room in this vacuum as well. And given that this year we have, हमने इसमें पहले भी at the beginning of the year भी बात की थी. There's again, it isn't just an election year. Even if you don't have, general elections, आपको अक्टूबर से पहले तो नहीं होंगे, लेकिन अभी तक तो वाज़े तौर पे ये हो गया. लेकिन इलेक्शन ये तो शुरू हो गया ना, कि आपका पंजाब में, केपी में तो अब क्लॉक शुरू हो गया है, केयरटेकर भी लग गए हैं. और बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस थे वो जो समझ रहे थे कि वो वाले आजम खान जो है उनको केयर निगरान वजीर आला बना दिया. ऐसा नहीं था. Just wanted to sort of, I thought it was very funny. जहाँ मीडिया हाउसेस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को खुद भी नहीं पता था कि कौन से आजम खान बन गए. बट एनीवे, केपी में निगरान बन गए हैं. आज इलेक्शन कमीशन का आखिरी दिन है, संडे का दिन है. अब तक उन्होंने फैसला करना है कि कौन होगा. सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इलेक्शंस कमिंग अप, एंड वी आल्सो हैव टू वेट एंड सी कि अब जो इन्होंने, यानी कि पीडीएम या पीएमएलएन ने जो सरप्राइज दिया है, सो कॉल्ड सरप्राइज दिया है, एक्सेप्टिंग रेजिग्नेशंस, उसका फिर आगे चल के क्या बनता है? What next is still something that you and I ask. I think the problem is when people in power also don't know what's next. Yeah, and I think it's interesting. Let's switch to the big development this week. For me, at least on the political front, was के 35-35 करके जो है 2 पंक्चर लगाए गए, 2 35 की बारियां लगाई गई कि रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट कर ली स्पीकर साहब ने. What do you make of this? Like, मुझे तो बड़ा अजीब सा एक कॉमेडी चल रही है पाकिस्तान की सियासत में, कि पहले नून लीग वाले कहते थे आप पंजाब और केपी डिसॉल्व करें तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो वो उन्होंने कर दिया. तो फिर नून लीग ने कोशिश की बचाने की, पंजाब नहीं बचा सके, तो फिर उन्होंने कहा नहीं अब हम सिर्फ वहीं इलेक्शन कराएंगे. इसी तरह पीटीआई कहती थी कि हम इस्तीफा दे चुके, हमारा इस्तीफा कबूल करो, हमारी मांगे मानो. तो वो चल रहा था ड्रामा इतने महीनों तक. फिर जब स्पीकर साहब ने इशारा दिया कि ठीक है मैं कबूल करना शुरू कर देता हूं, तो वो आ गए कि नहीं जी हम तो वापस आना चाहते हैं पार्लियामान के अंदर, हमें बिठाएं, हमारे इस्तीफे कबूल ना करें. तो ये एक अजीब सा कॉमेडी चल रही है कि पता नहीं कोई इंडियन परेश रावल की कोई मूवी बने ऐसी, तो फिर हंसी भी आए हमें, अभी तो रोना ही आता है. तो ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं नेशनल असेंबली में? मुझे तो लगता है ये अगेन this is an attempt, a clear attempt by the speaker and by the government to do pre-poll rigging, कि आप अपनी उनको काट दें वहां से, अपनी मर्जी का केयरटेकर सेटअप फिर जब लगवाना हो कंप्लायंस से लगवाएं. जो पता नहीं राजा साहब हैं, कौन क्या उनका पूरा नाम है, मेरे ख्याल में शहरियों को मालूम भी नहीं कि ऑपोजिशन लीडर कौन है पाकिस्तान में इस वक्त. राजा रियाज साहब, उनसे मुकमुका करके लगवा दें, और फिर यही करें जो होता है पाकिस्तान में कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन हो, और फिर जिसने रोना है धोना है वो रोता रहे, लेकिन हुकूमत आ जाएगी. अजीब सा सर्कस नहीं लग रहा आपको ये कि दोनों साइड पे पॉलिटिक्स ऐसे हो रही है? I know you're adding up the maths, but I'm going to complicate the maths a little bit for you here. इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ 70 जो रेजिग्नेशंस है, इस्तीफे जो है वो स्पीकर साहब ने कबूल कर लिए, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो 7 सीटें, आपको याद है बाई इलेक्शंस हुए थे,
वो उनको नोटिफाई भी कर दिया कि आप जीत गए, यानी कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब तोशाखाना केस की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको जाहिर है इस मुद्दत असेंबली की मुद्दत के लिए डिस्क्वालीफाई एज वो सीट पे डिस्क्वालीफाई किया था जो 2018 में उनको मिली थी. So the maths has gotten a little complicated, and it tells you the level of absurdity we're playing at. और वो At the कह रहे हैं same कि हम time, 35 पे लड़वाएंगे खान साहब को, ये भी कह रहे हैं 70 पे हाँ लड़वाएंगे. वो क्या, उन्होंने पहले कहा था अच्छा आप आए ठीक है 35 पे खान साहब लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा 35 पे ये ले 70 पे लड़े. लेकिन फिर वो जो 7 सीटें जिसमें एक सीट अगर वो अपना इमरान खान साहब ओथ ले भी लेते हैं और एमएनए वापस बन भी जाते हैं, तो फिर 6 सीटों पे वो मजीद इलेक्शंस लड़ेंगे. सो दिस इज द लेवल ऑफ absurd, I'm telling you, this is the level of absurdity that we're at, where it's possible Imran Khan may be running on 76 seats at least, or at least 77 in the coming days. देखें, let me just sort of cut through the crap here. बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए और इसरार करते रहे कि हमारे तमाम इस्तीफे कबूल कर लें. जब उनका मूड आया तो वो निकल गए, मूड आया तो वापस आने की कोशिश की. अब इस सूरत में मेरे ख्याल में पीडीएम हुकूमत ने जो किया उसको आप अब्सर्डिटी भी कह सकते हैं. एंड प्लीज आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि स्पीकर साहब ने अगर कबूल नहीं किए, ये कोई उन्होंने हाई माइंडेड उन्होंने ये कोशिश नहीं की क्योंकि कुछ लोगों को एतराज था. उन्होंने जाहिर है दिस इज अ पॉलिटिकल मूव, और अचानक से कबूल करना मतलब यही था कि उन्होंने उनको have sort of kept them out of the caretaker decision making. अब इतना तय है कि पंजाब, जहां आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पीटीआई एंड पीएमएलक्यू, जो भी आपकी कॉम्बिनेशन बनती है, वो इत्तेफाक नहीं कर पाए. पार्लियामेंट्री कमेटी भी नहीं कर पाई, इलेक्शन कमीशन करेगा. इलेक्शन कमीशन के खिलाफ परवेज इलाही वैसे ही अपना वो भी अपना अलम बरदार कर चुके हैं कि हम तो चैलेंज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में. सो यू विल सी के अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे उनको वापस उनको दावत भी दी जाती तो ऐसा नहीं होता कि आपका निगरान वजीर आजम पर कोई इत्तफाक आसानी से होता. और वैसे भी इमरान खान साहब ने भी इशारा दे दिया था, एंड द टाइमिंग इज ऑब्वियसली इज लिंक्ड, जिसमें बहुत सारे लोग आप समेत समझ रहे थे कि शायद ऐसा हो. कुछ लोगों की आवाजें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में और दीगर पार्टियों में कि अब निकल जाते हैं, अब क्या फायदा, ये तो सिस्टम इसका क्या कर सकते हैं. तो जब इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ प्रेसिडेंट साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं, तो उसके बाद फौरन इस्तीफे कबूल कर दिए. सो रियली इट्स जस्ट काउंटर मूव. इट मींस नथिंग सिंस post April जो कौमी असेंबली है, it's been a bit of a joke anyway. Essentially you're just adding joke upon joke, and a pile of debris and trash really. और And फिर that's my इवेंचुअली take जो on है it. वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में बहस वैसी होगी जैसे बच्चे नहीं लड़ाई करते कि उसने मेरे बाल नोचे तो फिर मैंने उसको नाखून मारे, I mean, तो उसने I just नाखून want to मारे point तो out the उसने level मुझे of मुंह पे मारा, exactly. चपेड़ मारा. Exactly. So the level of absurdity here is कि आप खुद मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं कि आपने खुद असेंबली से निकल गए जब नैब कवानीन में जो चेंजेस थी वो ला दी गई, फिर आप कोर्ट में गए वापस और कहा कि अब ये इन्होंने क्या कर दिया है, ये तो उन्होंने करप्शन को खत्म, मतलब करप्शन को ये जाहिर है फरोग देगा, ये नैब कवानीन कमजोर बना दिए हैं. अदालत ने कहा आप वापस जाएं असेंबली और इस पे आपको वहां यही सही फोरम है. दूसरी तरफ आप स्पीकर को देखें कि वो पहले कहते हैं कि नहीं वो 7 थे हमने कबूल कर लिए क्योंकि वो दे हैड इंडिविजुअली कम टू अस. वो पूरी लाइन आप लगा लें, जब वो मिलना चाहते थे तो आपस में उनकी कुछ मुलाकात नहीं होती थी, फिर आखिर में उनको अचानक से ख्याल आया कि हाँ नहीं अब तो मैं समझता हूँ कि इनके इस्तीफे वाकई कबूल करने चाहिए. No need to come to me individually and confirm whether you want to resign or not. Here you go, off you go. So I mean that's what can I say, Uzair? It's because nobody in power right now knows what's next. फिर जो है सियासतदान कहते हैं कि अवाम जो है सियासतदानों पे भरोसा नहीं करती, कि आपकी हरकतें भी ज़रा खुद ज़रा तवज्जो दें तो अजीब सी लगती हैं. बट एनीवेज ये तो हम करते रहेंगे कवर.
अंबर एक्सपर्ट की इंटरव्यू की तरफ बढ़े, मुल्क से बाहर भी हाँ, let's देखते हैं कि let's क्या हो let's रहा था। let's exit the absurdity of Pakistani politics into something a little more serious now. जी, तो वाघा के बॉर्डर से मैं आपको दिल्ली लेके जाता हूँ। आई इंटरव्यूड Mhm. अर्लियर दिस वीक रुद्रा चौधरी, ही इज डायरेक्टर ऑफ कार्नेगी इंडिया, इट्स अ थिंक टैंक बेस्ड इन न्यू दिल्ली। रुद्रा जो है वो he covers Indian foreign policy very closely, and the conversation really was about getting a sense कि दिल्ली में इंडिया चाइना की जो टेंशन है, हमने देखा तवांग पे क्लैशेस हुए थे अभी कुछ हफ्तों पहले, उससे पहले गलवांग लद्दाख के अंदर टेंशंस बड़ी हाई हैं। तो पहले आप देखें ये इंटरव्यू और फिर इस पे बात करते हैं। Rudy, thank you for joining us today. I want to begin our conversation with maybe you helping set the scene in terms of where the India-China relationship today is. We, of course, have had clashes on the border, the most recent ones in Tawang, and was wondering if you could just situate the Tawang clash in the broader context of the relationship, and what is the perspective in Delhi about this relationship, particularly the clashes on the border? Uzair, thanks a lot for having me. Before I get to Tawang and the recent clashes of 9th of December, maybe I'll just spend a minute or two in just outlining where are we when it comes to India-China relations. And I think the best way to do that is to think of this relationship in different inflection points. So if you just take a thread that starts from 1988, that is essentially when there was essentially a thaw that broke between India and China. That's when Rajiv Gandhi essentially visited Beijing on the back of Gorbachev's visit to China. And the geopolitical thinking at the time was pretty clear, which was that if the Soviet Union and China are getting back in sort of not in bed with each other, but essentially are revisiting what a strategic partner would look like since the 1960s, it would geopolitically make sense for India to engage with China. So that was the framework of the late 1980s visit. The framework actually had functional dividends. It led to a whole range of agreements between India and China. The most consequential of which was perhaps in 1993, which set out certain parameters through which India and China would look at the border, 1996, and then finally in 2005, which was popularly known as the Parameters Agreement. And the impulse of the agreement was pretty simple. It was to say is that, look, we have a long contested boundary. It's about 3,500 kilometers long. China, by the way, only claims that it's 2,000 kilometers long because it does not consider Arunachal Pradesh as contested, and which is one of the complexities in this whole business. But it says, look, we have a contested boundary, but the 2005 agreement was designed to invest in the political and economic relationship. So I think at some level, the view was that the political and economic relationship could help mitigate the risks on the boundary itself. Now, that story takes us up to about 2012, where there was an thinking in the government of India that actually the economic part is not paying any dividends to India. So since about 2009, the Indian side saw a deficit in trade, and that deficit has grown, and it continues to be one of the major areas of contestation between India and China on the economic side. But there's not much that we could do with it. They're a bigger economy. Our parts of our manufacturing industry, for instance, wasn't competitive enough. And we didn't get the kind of access to Chinese markets that we were promised perhaps in the early 2000s. So that was the framework that sustained us till about 2017, which is when the crisis took place in Doklam on Bhutanese contested Bhutanese Chinese territory, but essentially what I think many historians think is essentially Bhutanese territory. And that's when I think there was a thinking here that there's got to be a different way in which you can reach out to China. We saw some leader-led kind of dialogue. There was a dialogue in Wuhan. There was a dialogue in the Indian state of Tamil Nadu, where basically both the leaders got in a room and tried to see if they could work out certain differences. But it was very clear that by 2019 and 20, the wind had kind of shifted for a variety of reasons. Changes within China, the rise of Xi Jinping, the trade war that had kind of been well articulated by early 2020 between the Trump administration and China. And that context kind of, I think pushed many in India to reconsider its own position vis-a-vis China and what China could actually do for this relationship.
And it's interesting that it was in April of 2020 that India actually introduced the first set of notifications that would essentially gate Chinese investments into India. Following this, you had a clash on the boundary in Galwan, where you had fatalities on both sides for the first time since the late 1960s, since 1967, and obviously pretty big issue. And it is at that inflection point that the government of India takes what I think is a determined approach. So their view is that, look, 2005 was about focusing on political economic relations and localizing the boundary. 2020 onwards, the formula is clear. Is that unless there is stability on the boundary, there will be no stability in the political and economic relationship. So the formula kind of, changed, was turned on its head between essentially 88 and 2020. That's exactly where we are today. And I think the government's taken a consistent position, and it is within this framework that you have to see the skirmishes that take place in the boundary, even today. Got it. And then, and thank you for that helpful overview in terms of how that framework has evolved. And clearly we're seeing when we observe in New Delhi, right, Chinese companies like Xiaomi facing actions, toy import bans from China, and all of that basic economic stuff where, again, one could argue that digital India perhaps would not have been possible without cheap Chinese phones coming into the Indian market, which helped scale up the consumer digitization journey across the country. But that's for another day. How do you see Chinese strategy in terms of using places like Tawang as flashpoints and then having these clashes in the border? There's one perspective that says, well, it's part of the Chinese strategy also to make sure that India is tied up in the mountains versus the oceans, because that's where the Quad focus and the US focus is on sort of constraining China's growing influence down in the oceans. How do folks in Delhi see this strategy of the Chinese sort of, rattling the cage, so to speak, on the line of actual control? So Uzair, just two very quick brief points, right? One is just on the economic one, since you mentioned it. I think there is actually a well-coordinated and pretty serious effort on different parts of the Indian government and also private industry to essentially uncouple from China rather than decouple, right? So it's more tactical, operational level uncoupling rather than strategic decoupling, which I think the Indian state has understood is not going to be possible, right? Because there is a dependence on China when it comes to all different kinds of technology, whether it's a technology which is a component for an air conditioner, or whether it is a mobile phone and so on and so forth. But having said that, and I think this is where the argument in India has become sophisticated, as well as its practical manifestation, is that in certain key areas, in critical areas of technology, it is in fact going to be very difficult not only for a Chinese company to invest in India, but from any company around the world that has a supply chain that is drawn from China, right? In critical areas. And I think what the Indian state is trying to do and figure out is what exactly are those core critical areas, and how do you ring fence that from the larger trade that is already taking place and in fact increasing with China. So that's on the economic side. On the second one, which is on Tawang and the skirmishes, look, I think, we're at a very different place when it comes to the boundary today than we were pre-2020 for a variety of reasons and different drivers. But the outcome is, the expectation is that the line of actual control is going to be a lot more kinetic going forward than it was in the last 40 to 50 years. So I think my own estimation is that we're going to see skirmishes, escalations in different parts of the boundary. And, keep in mind, parts of the boundary are porous. It's impossible to essentially, man a 3,488 kilometer long boundary. You're going to need all sorts of assistance in order to do that. Now, why is it that China chooses particular points on the boundary at particular points in time? Look, I don't think, any operational strategist will be able to give you that answer from the outside as such. Tawang in itself is important. It hosts the second largest Tibetan monastery in the world. It's been important for China for a very long time. Zhou Enlai talked about Tawang. It's seen very much as part of Tibet. So there are cultural reasons, there are archaeological reasons, there are strategic reasons.
in the kind of location of Tawang. But my sense is we shouldn't focus too much on Tawang itself, is my view. Is we're going to see skirmishes in different parts. We'll see them in Ladakh again. We may see a skirmish even in Sikkim, which is part of the international boundary, right? And it's something that I think India will have to prepare for, which takes me to your last question is, how do you prepare for managing a boundary, keeping your other needs in mind, such as the maritime domain? The question you asked was, is China doing this essentially to make it difficult for you to invest in a different domain, like, the Indian Ocean, for instance, which in 7-8 years will be filled with Chinese platforms and vessels? That's just a fact, right? I have no idea. I can't give you a qualified answer on that. But the outcome of these strategies is essentially simple, is that India will have to, and it is, modernize its military infrastructure to be able to manage the boundary, whilst at the same time deploying capabilities in the Indo-Pacific. And actually, at some level, one theater is going to have to compensate and leverage what the other theater is not able to do. So it is going to have to be a comprehensive strategy where actions in one will have to be mitigated with the other. Yeah, no, I think it's a very difficult nut to crack, right? From even a strategic perspective, is resource mobilization, the doctrinal approaches, etc. That all has to play into the broader strategy and the broader framework that India has to develop in this instance. One piece of this, obviously, is this conversation we continue to hear, or every once in a while, not that constantly, of a 2.5 front war. Rahul Gandhi recently talked about this as well, following Tawang. How do you see that as a threat or as a risk in Indian sort of military or foreign policy thinking, with, line of actual control in the north, the line of control in the west? Both contested areas, Pakistan, China, obviously strategic allies. How is the Indian policymaker, or broadly speaking, the foreign policy and national security community, thinking about this two-front war scenario? Look, number one, we got to be clear, is that two-front war is not a new framework in India's lexicon. Okay. The idea of a two-front war was alive to Indians by the late 1950s. Even if you look at the 1965 crisis of the war between India and Pakistan, the real manifestations of a 2-4 crisis was brought to India's, attention. You had a war on the front, on the line of control, or what that time was called the ceasefire line, which then expanded into the international boundary, right? At the same time, you had Chinese maneuvers on the line of actual control in the east, where you actually had Chinese deployments, right? And it was none other than Sam Manekshaw, who would later become Field Marshal Manekshaw, who basically, wrote a range of memos saying is that, look, we are now in a situation where we might have to fight a two-front war. So the key question is, so this framework is not new to Indians at all. The key question and the downstream question is, what do you do about it, and how do you manage your procurement, your budgets, and your force structure to be able to deal with the two-front war? And that's a big question. It's a huge matter of debate for Indians, for politicians, for civil servants, for the folks in the military, keeping in mind that there are only limited resources. So the answer to this is in modernization. The answer to this is in partnership. The answer to this is in things that India can do with new defense partners in the West, the things that India now needs to do and is doing within its own defense organizational complex on modernization. And obviously, it brings sharp relief to the whole question of, how do you modernize with one hand tied to your back, given the geopolitical changes that are taking place, and the fact that, one of your largest defense suppliers is fighting a war in Europe. Yeah, and struggling to fight that war, and has sanctions on its own, and struggling to meet procurement for its own needs, let alone others. And I think that's a bigger question as well. Last question for you. You obviously referred to sort of leader-to-leader engagement that happened between Prime Minister Modi and Xi Jinping. They also had sort of a touch point on the sidelines of the G7 recently, or G20, sorry, recently as well. In 2023, do you see any breakthrough or any sort of similar engagement happening between India and China that leads to some balancing? Of course, from the US side, where I'm sitting in Washington,
already there's talk of, the wolf warrior diplomacy is taking a bit of a backseat. She's looking a bit more internally. Again, very early to tell whether this is tactical or a big part of a bigger shift. But do you see any engagement between China and India that sort of settles the issues, at least for the time being? So just 3 quick points. One, my own sense is that the government's stated position is the position that it also holds privately, which is very clearly that unless there is stability on the line of actual control on the boundary, the political and economic relationship will not be, will not reverse itself to the pre-2020 period. Number one. Number two, what does China want? And what has, say, Wang Yi been kind of saying for the last 1.5 to 2 years is essentially delocalize the boundary from the economic and political relationship, right? And at least publicly, the Chinese have been making the case that we're open for dialogue, right? But yet unwilling to essentially settle or essentially find some plausible meaning and stability on the boundary itself. So India wants a relationship that is built on new terms post-2020. China wants a relationship that goes back to 2005, right? Two positions are today irreconcilable, not only because of what leaders want, but what domestic politics and economics will allow the leaders to do, right? Third point, and Bali, my own sense is that it wasn't really it was a conversation. My own sense is it was made clear to the Chinese side what India's position is. There is an opportunity for the Chinese come this year. India holds the presidency of the SCO as much as the G20. So theoretically, Xi Jinping will be in town twice this year at least, right? But in order for China to prove its case for reopening dialogue, for stabilizing economic and political relations, it will have to demonstrate to the Indians through the military-to-military dialogue that is taking place on the boundary that it is serious. It will have to show de-escalation. It will have to dismantle certain infrastructure, and it will have to materially demonstrate to India that it is earnest about a new framework in this relationship, which, by the way, will not be pre-2020. India today is also wired for a future with China, which will be designed around cooperation without the larger framework of competition at a different scale, and not at a different scale to the United States, perhaps, but with certain similar impulses. Thank you so much, Rudy. This was fascinating, and we will look forward to that engagement. As you said, at least twice he's supposed to come to India, and in the run-up for that, maybe invite you again to share with us what's about to happen, if it is indeed happening. But thank you so much for sharing your insights. Appreciate it. Thank you, thanks a lot. Bye-bye. Bye. तो अंबर, इंटरव्यू आपने और नाजरीन ने भी देखा सुना। मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड कर दूं जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो पाकिस्तान से लिंक्ड हैं, जिस पे लोगों को अटेंशन पे करना ज़रूरी है। एक ये कि रुड्रा ने और रूडी एज ही गोज said something interesting कि एक कंसेंसस था over the last few decades between India and China कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इश्यूज हैं उस पे हम एक फ्रेमवर्क तय करके बातचीत करते हैं, और बातचीत हुई और वो काम हो गया था। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप और डिप्लोमेसी जो है वो आगे चल रही थी इंडिया चाइना की। इट वाज़न्ट एज फ्रॉस्टी, और एक तरह से प्रोग्रेस हो रहा था, पर्टिकुलरली इन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। लेकिन इन क्लैशेस के बाद एक पोजीशन है दिल्ली के अंदर अब कि जब तक नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इश्यूज पे चाइना रोल बैक नहीं करता कुछ चीज़ें, उस वक्त तक इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट और तजारत के इश्यूज जो हैं वो इश्यूज ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया डज नॉट वांट टू कंटिन्यू डीपनिंग इट्स डिपेंडेंसी ऑन चाइना एज दे सी इट व्हाइल दे आर एक्सपोज्ड टू दिस रिस्क। एक ही है। दूसरा, मैंने उनसे जब पूछा कि ये जो 2 फ्रंट वॉर की बात की जाती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ, तो उस पर इंडिया का क्या व्यू है। तो वो भी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की कि द पोजीशन सो फार इज कि दिस इज गोइंग टू बी एन इशू दैट हैज टू बी डेल्ट विद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और हमें जो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तेजी से आगे बढ़ानी है। Obviously that links to economic growth and deeper ties with the United States, for example, which then again is a problem on the Pakistan side, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं लोगों से और वो strategic stability की बात करते हैं रीजन के अंदर,
they're very concerned कि इंडिया के पास अब S-400 सिस्टम है, रशिया के साथ रफाल जेट्स आ रहे हैं, अमेरिका के साथ ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी की बात हो रही है वगैरह वगैरह। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए, तो मईशत आगे बढ़ानी है, पाकिस्तान की मईशत पे हम बात वैसे ही करते रहते हैं। तो ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं रीजन के अंदर। एक ये कि इंडिया चाइना इश्यूज आर नॉट गोइंग अवे, एंड टू, इंडिया का रिस्पॉन्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होगा, जो कि पिंडी में हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद में भी कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, उनके लिए जो है वो नाजुक सूरत हाल बन जाएगी इस वजह से। नाजुक सूरत हाल। और हम और कितने, हम कैसे पैसे निकालेंगे मोर मिलिट्री हार्डवेयर के लिए इज द क्वेश्चन। यू नो, यू वी सीन मल्टीपल स्टोरीज है जहां हमारा सबसे ज्यादा जो पैसा चला जाता है, हम टैक्स कलेक्शन में तो इतनी पूरी कर नहीं सकते, इज डेट सर्विसिंग एंड मिलिट्री स्पेंडिंग। सो वेयर इज द मनी गोइंग टू कम फ्रॉम? Yeah, that is the tricky. Without economic reforms, that's a problem. And I think India ka obviously view hai कि because they're in a strongish position right now, economically, diplomatically, कि वो modernize कर सकते हैं. So I think that's going to be something interesting to keep an eye out on. And obviously, इस हफ्ते, as we were talking before we recorded, India is in the news because of the BBC documentary. मैंने एक किस्त आई है उसकी नहीं देखी, आपने देखी है, और फिर बैन भी लग गया, ट्वीट के ऊपर भी बैन लग गया। और मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि चाइना में कुछ सालों पहले विनी द पू पे बैन लग गया था, क्योंकि चाइना में लोग विनी द पू को कंपेयर कर रहे थे शी जिनपिंग से। तो ऐसी कोई सूरत हाल बन रही है? आपको क्या लग रहा है एज अ जर्नलिस्ट हुज वॉच्ड द डॉक्यूमेंट्री एंड द कंट्रोवर्सी अराउंड इट? Yeah, I mean, I've watched a part of the documentary on इस हफ्ते जो next week उसका second episode भी आ रहा है। और ban तो लगा दिया इंडिया ने, but there's been a lot of very good people out there. Thank you to all the good people out there who have been saving it, archiving it for free use, जिससे आपको जाहिर होता है कि bans don't really work. And it tells you that you have something to hide. Or I think the most important sort of point I would extract from this, and I want to see more of the documentary to be able to comment more on it, and I think I will try to get somebody from India or somebody who comments on India to talk about it as well. It is based on sort of fresh evidence of Modi's connection to Gujarat, to the good Gujarat riots, and the BBC had asked obviously the government for their version, which इसमें होता यही है कि फिर governments जो होती हैं वो अलर्ट हो जाती हैं कि कुछ ऐसा कुछ आने वाला है, और ये एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी नजर आती है जहां आप जवाब नहीं देते और फिर उसको ये कहकर बैन कर देते हैं। मैं सुन रही थी जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है इंडिया के, उनका कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, that this is propaganda. Well, it is going to be one-sided and propaganda if you're not going to present your point of view. So really it just tells you that there's something to hide. And I think it also sort of indicates जो ये पाबंदी आयद हुई है, जो ट्विटर पे भी लोगों को नोटिस आए हैं, suspend हुए accounts, it tells you also about India's reach within social media platforms and companies as well. So that's a couple of things that I'd like to extract from it, and I'd like to watch more of the documentary. It starts off with a very powerful account of this, and I think this is really key here कि एक बरतानवी एक भारतीय निजाद बरतानवी शहरी, वो जब इंडिया वापस 2002 में आया था और उसके रिश्तेदारों के साथ जब वो when they were caught up in that moment, कत्ल भी हुआ, उनकी क्या हुआ, so opens up with a very powerful testimonial, and it shows Modi's role in it, his compliance, him being complicit, and obviously also clarifies the fact that even though he was absolved of all charges, or sorry, my आवाज उनकी बैटरी थी, but absolved of all charges, it also goes to show you, I think even if the BBC without the government's version were able to at least present BJP in the Modi's point of view, it is going to look one-sided if you're not going to participate in it, which tells you how independent journalism is viewed and is increasingly squeezed in India. And I will also say there's been some excellent, and I will pull out some and send them to you there for links as well, some excellent reporting on the riots as well by Indian journalists as well. तो ऐसा नहीं है कि भारतीय सहाफियों ने अपना उनका काम नहीं किया, लेकिन जाहिर है जो बीबीसी करता है तो उसका reaction, response, controversy is another level. और बीबीसी जो है वो पाकिस्तान में श्री मज़ारी साहिबा भारत ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कहती हैं, इंडिया में लोग उनको प्रोपेगेंडिस्ट कहते हैं। I know, I was going to go there because I worked at the BBC. I know कि किस तरह से हमारे कुछ प्रोग्राम से उन पे पाबंदी आयद की थी, and how the BBC is viewed in Pakistan as well, which is
जो श्री मजारी साहिबा कहती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ताकतवर हलकों के उनसे ताल्लुक है, वो यही समझते हैं. सो बिल्कुल. दैट्स नॉट द और केस. शेख हसीना की गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे ही व्यूज रखती है ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पे जो अगेन क्रिटिकल. एक इंटरेस्टिंग थिंग अंबर इसके अंदर इस पूरे सागा में मुझे जो एक सब कॉन्टिनेंट की शेयर्ड कॉलोनियल लेगेसी हमें नजर आती है, वो ये कि जो क्लॉजेज इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोपेगेंडा कोट अनकोट को रोकने के लिए, वो यही लैंग्वेज होती है कि इट थ्रेटन्स द इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्लैंक. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मे बी श्रीलंका और नेपाल में इतना फॉलो नहीं करता, शायद वहाँ भी ऐसे ही कुछ कवानीन हो कि वो ही अप्लाई होते हैं. तो हंसी आती है देख के कि ये भाई भाई ही हैं एक तरह से इन चीज़ों में, कि कवानीन वैसे के वैसे ही, जबान भी वैसी की वैसी, और उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन भी एक ही उसी तरह से ही होती है. I want to point out a quick irony here because जो इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना था कि ये डॉक्यूमेंट्री this is a reflection of the colonial mindset of the British Foreign Office, which I think is ironic given कि आपने जैसे फरमाया कि हम उनके बनाए हुए कवानीन जिनकी अब कोई जगह नहीं है 21वीं सदी में, वो बहुत बेहद इस्तेमाल करते हैं. लेकिन होता कलोनियल माइंडसेट है. जब आप एक डॉक्यूमेंट्री है that you should at least watch and engage and debate with on merits and facts. So Yeah, and I think the final sort of, मैं ये बात पाकिस्तान में भी लोगों को कहता हूँ, जब आप बैन करते हैं किसी चीज को तो उसकी पब्लिसिटी आप खुद ही एम्पलीफाई कर रहे हैं. तो अब पूरी दुनिया बात कर रही है इस डॉक्यूमेंट्री की. आप बैन नहीं करते तो शायद 5, 10, 15 हज़ार लोग देखते, एक दो खबरें चलती, खत्म हो जाती. अब देखें, उन्होंने जब बैन किया तो करंट थापर अगले दिन जैक स्ट्रॉ को अपने पॉडकास्ट शो पे ले आए द वायर के. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. और ये भी अगेन कोई ढकी छुपी बात नहीं. अभी इलेक्शन जब गुजरात में हो रहे थे तो अमित शाह ने तो ऑन रिकॉर्ड अपनी स्पीच में ये बात की कि 2002 राइट्स जो थे उसमें हमने सबक सिखाया लोगों को. अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दोज हु वांट टू रीड हिज एग्जैक्ट कमेंट्स. तो अगेन जब बीजेपी का नंबर 2 खुल के ये बात खुद कह रहा है तो उसमें क्या प्रोपेगेंडा है डॉक्यूमेंट्री पे. बट एनीवेज, दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट. आखिरी सेगमेंट अंबर, विनर्स एंड लूजर्स. इस दफा व्हाई डोंट यू किक अस ऑफ विद कौन जीता कौन हारा, और आप एंटी एलीट्स क्यों हो गई हैं आज? नो, एंटी लीड तो मैं हूं ही. और फिर कोई मुझसे पूछेगा कि आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गई, आपके पास गाड़ी है वगैरह वगैरह, तो आप एंटी लीड कैसे हो गई? नहीं, मैं एंटी इलीट तो जाहिर है होना भी चाहिए. elite capture की आप भी बहुत बात करते elite, but for winner, I'm going to start off with winner. I think Jacinda Ardern, resigning from a post and taking a break from politics is refreshing. I hated some of the debates around it, but I will say that it at least tells you, मुझे लगता है कि जो खवातीन leaders हैं, जिसमें मैं कहूँगी एंगेला मर्कल इसमें शामिल हैं, have actually shown a lot of the way or the path and how leadership needs to change. जो हमें यहाँ पाकिस्तान में माचो किस्म की leadership नजर आती है, ये games and one-upmanship जो आपको नजर आती है, जिसमें आपको वो 35 इस्तीफे और फिर 35 इस्तीफे एक मिसाल है उसकी. But on the other hand, where you see कि she was criticized a lot for her COVID-19 policies and got a lot of backlash for it as well. वहाँ भी महंगाई का issue रहा है, obviously not at the same scale as well, but at the same time she also showed how one can be compassionate, one can be kind, and I think that kindness is something that is missing from much of the world leadership, and especially the populist variety that you see around the world. And then just taking a step back from politics, not clinging to power. So yeah, so even though that was also framed as something that women can't have it all, and the BBC did it, which I found problematic, but I think it's great when you feel like you're leaving at a point where you've done what you could do, and you just take a break and step back and do something else. Meanwhile, in DC, there are 90-year-old senators जो फिर इलेक्ट होके आ गए अगले 6 साल के लिए, और उनका पता नहीं सॉफ्टवेयर तो अब अपडेट हो भी नहीं सकता, क्रैश हो जाएगा पूरा सिस्टम अगर अपडेट करने की कोशिश की. बट आई एग्री, मैन डोंट लाइक टू गिव इट अप. और वही जैसे आपने कहा पॉपुलर वैरायटी स्पेशली, बट वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी, आंखों में आंखें डाल के हम निगोशिएट करेंगे. और ये वो खवातीन लीडर्स जो हैं, I'm forgetting her name, but the leader of Barbados, for example, her advocacy on climate change has been amazing. And so really, they are leading the way and showing that there's a different
way of doing politics. So I give 2 thumbs up to your winner. Loser कौन है आपका सबसे? Okay, so the loser is actually a few losers, but I think the story is important. ये जो एक लाहौर का elite school है, वहां से जो वीडियो वायरल हुई, कुछ बच्चियां जिन्होंने एक और बच्ची को बहुत बेदर्दी से उसको मारा, and a couple of comments on that. जो वालिद का इंटरव्यू है, क्योंकि ये भी मैं वाजे कर दूं कि इस वक्त जो प्री अरेस्ट बेल भी उन लड़कियों को मिल गई, क्योंकि जो जिस बच्ची को मारा गया था, बहुत उसकी पिटाई हुई थी, उसके वालिद ने एफआईआर भी दर्ज कर ली थी, जिसकी वजह से जो असॉल्ट जिन्होंने किया था उनको प्री अरेस्ट बेल लेनी पड़ी. बट देयर हैज बीन रियली बिग पीपल बेइंग फॉर ब्लड, ब्लेमिंग एलीट, ब्लेमिंग गर्ल्स, औरत मार्च वाले कहाँ हैं. एंड आई थिंक द प्रॉब्लम फॉर मी, द लूजर्स आर रियली एक्चुअली द वे वेयर द डिबेट गोज. एंड आई वांट टू पॉइंट आउट दैट एक नुकसान भी होता है, फायदा होता है जब कोई चीज सोशल मीडिया पर आती है. क्योंकि ये वाकया हुआ था, उसके बाद जो वालिद चाह रहे थे कि कुछ उनको अपनी बच्ची के लिए, जो जिन लड़कियों ने किया था, उनको कुछ किसी ना किसी तरीके से सजा दी जाए. और जब स्कूल में अंडर एज बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं, तो सजा यही हो सकती है कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाए, और फिर वालिदैन भी कुछ तरीके से डील करें, बिकॉज दे आर एट अ यंग एज. But I think that इसमें school has obviously has very poor and lax policies on bullying, as well as the use of mobile phones within school premises. I think those are also issues. But I also, because jo father the, the father who's given an interview to a few YouTube channels, has also said that he has been he's been getting calls from powerful people, that these people are connected, well connected, etc etc. And ये social media पे भी जब leak हुई, तभी ज़ाहिर है outrage हुआ, फिर ही कुछ आगे बात बढ़ी. But I think it tells you, given that many of these girls are young girls just starting out, in सबकी कोई बहुत सारों की details जो हैं, उनकी शक्लें, तस्वीरें, including the girl who was assaulted, इन सब की तफसीलात जो है सोशल मीडिया पे आम आई हो थिंक गई है. घर का पता भी चल रहा था सोशल मीडिया पे. Exactly, घर के पते सारे भी चल रहे थे. And that is actually the sort of the power and the peril of social media, which is कि अगर आपको इंसाफ चाहिए for an individual, वो शायद आपको मिल सके maybe अगर वायरल हो जाए, लेकिन उसके नुकसानात भी क्या होते हैं कि फिर आपकी privacy intrude हो जाती है, and it really might not actually solve the problem. And the third, I think, is कि I don't see, there are a lot of good people जो जब मदारिस में और ऐसी जगहों पे, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से बच्चों पर जो corporal punishment is, how common it is in schools, assault, rape, and all of these things in all kinds of educational institutions, harassment including. लेकिन उस पर इस डिग्री की बात नहीं होती, इतनी ज्यादा बात नहीं होती जितना इस केस पे हो रही है, which I think tells you a lot about not the elitist mindset of the school or the girls who are involved in it, but it tells you about the elitist mindset of the people who comment on it, क्योंकि वो they can't relate to these people, या वो they can't project their insecurities and fears, तो वो खबर जो है वो कहीं it gets brushed under the carpet, gets forgotten. No, I loosely followed this whole development, and again, as you said, मुझे बड़ा अजीब सा लगा. स्कूल की लड़ाई है, बुलिंग है, नहीं होनी चाहिए. उसका एक टिपिकल प्रोसेस होता है इंटरनल, एफआईआर काट देना, फिर बेल बच्चों को, मतलब दिस ट्रॉमा ऑन ईदर साइड नाउ, राइट. एक तो जिस बच्ची के साथ बुलिंग हो रही थी, हरासमेंट, असॉल्ट हो रहा था, वो तो वैसे ही रहेगा, और होपफुली दे गेट सम हेल्प एंड काउंसलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बट फिर जिन्होंने ये किया, उनको आपने इस तरह ट्रीट करके एफआईआर, बच्चे हैं ये, और देयर इज अ वे टू एंगेज विद किड्स एट दैट एज, नो मैटर हाउ मच बुलिंग दे डू और हाउ वायलेंट दे माइट बी. आप उनको जेल में अगर डालेंगे तो वो और इशू बढ़ेगा. एंड आई थिंक these basic things, not getting them right, is a huge problem. On my side, Amber, going back to sports, the winner is Andy Murray. The Australian Open is on. Andy Murray, 35-year-old, multiple-time Grand Slam winner. He made an epic comeback, 2 sets हारने के बाद, and won a game. But then उसकी जो कीमत उन्होंने अदा की, he was very stiff in the next game. चल नहीं सक रहे थे, भाग नहीं सक रहे थे, and he still fought on. The crowd got back, on his side. They cheered him on. He fought. He ultimately lost. But to me, the match, this has been, we lived through a golden generation of tennis. Andy Murray being one of them. He's number 4 or 5, but not like Nadal or Djokovic or Federer. But, Nadal also went out with an injury in this tournament.
and Murray fought on. Who knows whether he'll be back or not. But just to see that grit from a multiple-time world champion to continue fighting when he could have just and walked not out give up, right? I mean, and that's not the whole give up. point, and that's actually sort of one of the beauties of sport, that you see that these are the sort of lessons that you get as well. Don't give up, even if Yeah. you think you're losing. Fight to the end. Yeah, which he did. So he really like stuck with me, that match and the highlights of those two games. People should check it out. Domestically, I have two losers. One is Parvez Elahi, because he's continuing social media पे वही typical पाकिस्तानी सियासी चूरन जो बेचा जाता है religion के नाम पे, कि हमारा विजन इस्लाम को की जो है स्ट्रेंथ करना है, और हमने जो है वो नामूस रिसालत की क्लॉज डाल दी निकाहनामे पे, और ये इमरान खान का विजन है रियासत मदीना वगैरह. आई थिंक इट्स लाइक इतने सालों बाद अगर इस मुल्क की सियासत अभी भी जो है वो इसी चूरन पे अटकी हुई है, और यही चूरन अगर बिक रहा है वोट लेने के लिए, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ सैड द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज. जहाँ अडल्ट मेल न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो रही है, वहाँ the outgoing chief minister of the largest province of the country, the most populated province of the country, I think on its own, it's one of the largest 10 countries in the world on population, if I remember my data correctly. उसका outgoing chief executive जो है, वो दीन का चूरन जो है, वो फिर एक बार बिक रहा है पंजाब के अंदर. आई थिंक इट्स हर मोमेंट पे हमने ये पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि सियासतदान वोट के लिए या किसी और चीज़ के लिए या आमिर किसी और चीज़ के लिए राइट वर्ड जाते हैं, अपीज करते हैं रेडिकल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी को, और फिर उसका मुल्क को और माशरे को नुकसान ही होता है. तो ही इज़ अ लूजर फॉर मी. एंड द सेकंड लूजर, अंबर, यू मेंशन्ड द स्कूल एंड द एलीट्स, इज लाहौर जिमखाना एंड द एलीट्स ऑफ दिस I was hoping you'd bring that up. Yeah. कि आपने जो है 5,000 रुपए सालाना के रेंट पे 50 साल की लीज करा दी अमीरों के प्लेग्राउंड के लिए. उसका मोटा मोटा हिसाब जो मैंने किया अमार खान, मुशर्रफ जैदी और एक और मेरे दोस्त के साथ, कि इसका रेंट एट मिनिमम बनता है 30 करोड़ रुपए महीना, और आपने 50,000 रुपए सालाना दिया है उनको. और अगर आप 30 करोड़ रुपए माहाना का हिसाब लगाएं, तो अगर हम 6,000 रुपए कहें कि हर स्टूडेंट पे खर्चा करेगी सरकार पंजाब की, तो ये 50,000 स्टूडेंट्स की का खर्चा है माहाना, जो कि लूटा गया. और ये जब हम एलीट कैप्चर और लूट की बात करते हैं, तो लाहौर जिमखाना इज जस्ट वन एविडेंस दिस वीक अलोन कि किस तरह बेदर्दी से इस मुल्क की रिसोर्सेज को लूटा जाता है, ताकि अमीर जो हैं वो टेनिस खेल सकें, स्क्वाश खेल सकें, रात को ब्रिज खेल सकें, और अच्छे खाने सब्सिडी पे खा सकें, क्योंकि उनको जो ज़मीन दी जाती है उसका 30 करोड़ का रेंट उनको 5,000 सालाना में दिया जाता है. I would absolutely agree, and I think इसकी और भी मिसालें, क्योंकि हम लाहौर जिमखाना की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपको दो और केसेस इस्लामाबाद के भी हैं. Munal being one of them, a restaurant, आपने एक रेस्टोरेंट, एंड देन ऑब्वियसली एक नेवी क्लब रावल लेक के किनारे खोलना था, वो भी इसी तरीके से. ये लीजेस, ये डील्स, ये बहुत कीमती जो आपके पास एक सरमाया है जो जमीन की शक्ल में है, जिससे आप कमा सकते हैं. आप इवन इफ यू कांट टैक्स लैंड, व्हिच इज अनदर बिग क्वेश्चन, इज when we talk about what next and how to collect revenue, that's one thing that you could do, but वो हम ऐसे ही दे देते हैं ताकि चंद लोग, कितनी फीसद आबादी होगी, चंद लोग अपनी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और खाने पीने का सामान जो है वो यहाँ एंजॉय करें. And I think it's absolutely, it is criminal. It feels criminal at this point in Pakistan's economy and politics. बिल्कुल. तो on that note, we'll talk about revenues, how to change that structure, and how Pakistan, I think broadly, ये बात मैं आप पहले भी कह चुका हूँ इस पॉडकास्ट पे, we've talked about it at length, अंबर, कि ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में रिसोर्सेज नहीं है. रिसोर्सेज बहुत हैं, रिसोर्सेज जा गलत जगह रही हैं. तो maybe next week we'll talk about that. But on that note, thank you again for taking out the time today. Thank you to all the audience for tuning in. Subscribe to the podcast. Don't forget to share it with your friends and family. And both of us are on Twitter. So if you have a specific topic जिस पे आप कहते हैं कि हम focus करें, so please do share it with us, local, domestic and global. Until next time, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.